be achieved during the flight regime. जी हाँ, आरोहण क्रम By में which जारी time? है। Performance normal. TVD1 का प्रणोद सामान्य +1 मिनट। Engine thrust cut off. CES separated. HGM motors are ignited. Grid vents deployed. TVD1 को पृथक कर दिया गया है और CES, CM साथ में कोस्टिंग फेज में है। ग्रिड फेंस डिप्लॉय कर दिए गए हैं। Quick succession of events here. All the events have been taking place as per the prediction. The grid fins have been deployed, the test vehicle has been jettisoned. इस क्रम में अगली घटना CJM मोटर की फायरिंग के साथ क्रू मॉड्यूल को क्रू एस्केप सिस्टम से सेपरेट कर दिया गया है। Now the crew escape system has been jettisoned, the apex cover has been jettisoned, and now the orbital module is reorienting itself under aerodynamic loading. जी हाँ, इसके साथ ही डिसेंट फेज शुरू हो चुका है क्रू मॉड्यूल का। Drogue chute +2 minutes. are decelerating the crew module. Around 200 seconds of this regime will adequately bring down the velocity of the crew module. Thereafter, the pilot chutes will deploy the main parachutes. ड्रोग शूट डिप्लॉय किए जा चुके हैं। यह करीब 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर डिप्लॉय कर दिए गए थे और करीब 200 सेकंड्स में क्रू मॉड्यूल की गति को 152 मीटर प्रति सेकंड से 62.8 मीटर प्रति सेकंड तक लाएंगे। On your TV screens, the visuals, the real-time visuals of the drogue parachutes in a deployed condition being captured from the crew module. Current altitude 10 kilometers. +3 minutes. इस क्रम में अगली घटना जब ऊंचाई 2.4 किलोमीटर की रह जाएगी तब ड्रोग पैराशूट को क्रू मॉड्यूल से अलग कर दिया जाएगा तथा पायलट और मेन पैराशूट डिप्लॉय किए जाएंगे। क्रू मॉड्यूल की गति पूर्व निर्धारित तरीके से कम की जा रही है। यह ड्रोग पैराशूट के कर्षण के कारण होता है। The intent of drogue parachutes is to reduce the velocity of crew module from 145 meters per second to 51 meters per second. Current velocity 61 meters per second. क्रू मॉड्यूल धीरे धीरे नीचे आता हुआ ड्रोग पैराशूट +4 minutes. उसकी गति कम की जा रही है। விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் ககன்யான் திட்டத்தின் சோதனை மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது. அதனுடைய நேரடி காட்சிகளை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் ககன்யான் திட்டத்திற்கான மாதிரி விண்கலம் விண்ணில் ஏவப்பட்டுள்ளது. ககன்யான் திட்டத்தின் முதற்கட்ட சோதனையாக மாதிரி விண்கலம் TVD1 ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் பாய்ந்துள்ளது. ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் இருந்து ககன்யான் திட்டம் சோதனை ஓட்டம் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. அதனுடைய காட்சியை நாம் பார்க்கிறோம். ககன்யான் திட்டத்தின் முதற்கட்ட சோதனையாக மாதிரி விண்கலம் TVD1 ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் பாய்ந்துள்ளது. விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் ககன்யான் திட்டத்தின் சோதனை ஓட்டம் தற்போது விண்ணில் பாய்ந்தது. விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்புவதற்கான ககன்யான் திட்டத்தின் முதற்கட்ட சோதனையாக மாதிரி விண்கலம் DV-D1 ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் பாய்ந்துள்ளது. ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் இருந்து மாதிரி விண்கலம் விண்ணில் பாய்ந்தது. खूबसूरत नज़ारा, ये 3 मेन पैराशूट्स डिप्लॉय हो चुके हैं और यह वह अंतिम चरण है जब क्रू मॉड्यूल की गति को
8.5 मीटर प्रति सेकंड से कम ले आया जाएगा और क्रू मॉड्यूल टच डाउन करेगा। To bring down the velocity of impingement in the sea to around 8.5 Crew module in Physics. descent phase with main chute. Plus 6 minutes. relative velocity now 12 meters per second. We are at an altitude of 1.6 kilometers. परीक्षण पूर्व निर्धारित तरीके से जारी है। गति धीरे धीरे कम होते हुए अब 15 मीटर प्रति सेकंड रह गई है और ऊंचाई 1.5 किलोमीटर। Indian Navy team is readily deployed in the sea around the Sriharikota coast for quickest possible reaching to the crew module and then recovering it. अंत में टचडाउन के पश्चात मेन पैराशूट को भी क्रू मॉड्यूल से अलग कर दिया जाएगा तथा क्रू मॉड्यूल अपने आसपास रंग बिखेर देगा जिससे इसे लोकेट करने में आसानी होगी। वहां सुरक्षित दूरी पर तैनात प्लस 7 मिनट भारतीय नौसेना के पोत इसके पास जाकर उसे रिकवर करेंगे। The crew module is provided with flotation systems and it will be remaining afloat until the recovery crew reaches it. To aid in recovery, sea markers and location transmitters are provided to be identified at the quickest possible time. यह सब एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाने की प्रक्रिया है। Crew module in descent phase with main chute. यह डिसेंट फेज जारी है। मेन पैराशूट के साथ क्रू मॉड्यूल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब ऊंचाई 0.8 किलोमीटर रह गई है। प्लस 8 मिनट्स टचडाउन की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। As we told you, 8.5 meters per second is the benign touchdown velocity. We are now observing around 9 meters per second velocity, while the altitude is around 600 meters. सभी गतिविधियां पूर्व निर्धारित तरीके से पूर्ण हो रही हैं। इससे पता लगता है कि वैज्ञानिकों की गणना कितनी सटीक है, विश्वसनीय है और उसका ही प्रदर्शन आज यहाँ किया जा रहा है। प्लस 9 मिनट्स 300 meters altitude. ऊंचाई धीरे धीरे कम होते हुए 200 मीटर की ऊंचाई रह गई है। गति 5 मीटर प्रति सेकंड। When the crew module touches down, eventually the main parachutes also will be released away from the crew module. Impact is sensed. Now the confirmation is available for a successful splashdown of the crew module. यहाँ इसकी घोषणा कर दी गई है। क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित टचडाउन करा दिया गया है बंगाल की खाड़ी पर। ये आप विजुअल देख सकते हैं, खुशी की लहर वैज्ञानिकों में। Jubilant ambience in the Mission Control Center here at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. On your TV screens, the visuals live from the Bay of Handing over to Bengal. Mission Director. This is Mission Director. The TV D1 mission has fully accomplished its objectives. The crew module has safely landed
the targeted point. मिशन उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है। अब आपको संबोधित करेंगे इसरो अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ। ISRO has achieved a successful test vehicle flight and has moved a step closer to the prestigious Gaganyaan mission. We take leave from you. Do continue to stay tuned for the address by Secretary DOS, Chairman ISRO, Shri S. Somnath. आप सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। हम आपसे आज्ञा लेते हैं। I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TVD1 mission. The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration in which the vehicle has gone up to a Mach number, which is a speed of sound slightly above that, and initiated an abort condition for the crew escape system to function. The crew escape system took the crew module away from the vehicle, and subsequent operations of the crew module separation from the crew escape system, all the parachutes opening and touched down in the sea at the required velocity has been very well accomplished, and we have got confirmation of the data of all of this. And we will be further doing the approach recovery operations of the crew module to be collected from the sea, brought to the port by the ships. That activity will continue to happen. Till now, based on the data, everything has performed very nominally and perfect. I would also like to tell the reason for why we had a hold. We initially wanted the launch to happen at 8 o'clock in the morning, but there was some weather-related issues. We have rescheduled the launch to 8:45 a.m. But after going through the nominal liftoff process, there was a hold issued by the ground computer, which is called the automatic launch sequence computer, which detected a sort of a non-conformance for allowing the engine to continue the thrusting to further go. So this happened due to a monitoring anomaly in the system. So we could identify it very, very fast and correct it. And to make the stage ready, it took some time to refill the gases. And that once that has been completed, we went through the proper automatic launch sequence which checked the entire health of the vehicle. And finally the mission computer and the ground checkout computer authorized the launch to take off, which released the rocket from the launch pad, and subsequent activities of the flight as well as the post termination abort sequence also got executed perfectly. So I'm very happy that our team could understand in case of any anomaly how to rectify and come back fast. And congratulations to everybody. This is a big training for the entire team here to prepare for the Gaganyaan program. I'm very happy that launch could take place today within the allocated launch window. And we will come back with more analysis and data of this mission on recovery of the crew module, which is happening now. We are having views from coming from the sea, from the drones, cameras which are being taking them. Before we get any further updates, I would like to introduce the mission director, Sri H. Shivakumar, and the director of the crew module and crew escape system to you. So over to Shivakumar. Thank you, Chairman ISRO. All center directors, senior members, MRR and FRR team, and all distinguished guests. It's like words are not coming up. Yeah. Sir, this is like, never before attempt. It's a bouquet of 3 experiments put together, and we have now seen the fragrance and the characteristics of all 3 systems with what we wanted to test through this experiment or this mission. The test vehicle, the crew escape system, the crew module, everything I think we have perfectly demonstrated in the very first attempt, but for the initial hitch, but that's nothing a problem at all. All the systems performed well. I thank you for all the support provided by the entire team of ISRO across all centers of VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, HSFC, etc. Thank you all, sir. It was a penance for us for the last 3-4 years, and then we have reached the D-Day today.
and it was a very happy occasion that we could make it on the very first attempt. Thank you. Now, Mr. R. Hutton, he is the mission executive for the crew module realization and also the mission director of the Gaganyaan. Excellent. Hearty congratulations to all, my dear team ISRO and team India. As mission director has already said, I'm not getting any words to appreciate the whole team. In fact, it's as far as the Gaganyaan program is concerned, this is the first major milestone. In fact, this is going to be a great motivator for all of us in the Gaganyaan, cut across all the ISRO centers. And in this particular Gaganyaan, the most important is the safety of the crew.